Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about the entitled theme, Identification of Hearing Impaired Children. Hearing impaired children are those children who possess the defect or deformity in the sense of hearing. Now question arises, how we will identify hearing impaired children, or how we will detect the hearing loss. There are various methods and other assessment techniques by which we can identify hearing impaired children, or we can detect hearing loss. Number 1, newborn screening. Newborn screening is that screening which is conducted after the birth, यानी कि बर्थ के बाद बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, या हम कह सकते हैं मेडिकल स्क्रीनिंग, such as blood screening, heart screening, by and large hearing screening and vision screening of the child in order to detect health issues of the child. Hearing screening से पता चलता है whether the child possesses normal hearing or child has any issue related to the hearing. बच्चे में माइल्ड हियरिंग लॉस है, मॉडरेट हियरिंग लॉस है, सीवियर हियरिंग लॉस है या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, ये हियरिंग स्क्रीनिंग से पता चलता है जो बर्थ के बाद कंडक्ट की जाती है. इसी तरह से विजन रिलेटेड स्क्रीनिंग कंडक्ट की जाती है. विजन रिलेटेड स्क्रीनिंग से डिटेक्ट होता है eyesight related problems, whether the child possesses normal vision or the child has issue related to the eyesight. तो नटशल में हम कह सकते हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बर्थ के बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन एक इन्फेंट का होता है, that is known as newborn screening. Number 2, parental observation or parental screening. Parental observation means parents are observing behavior of the child in order to detect the various health related issues. For instance, parents notice करते हैं क्या हमारा बच्चा जो है वो हियरिंग एबिलिटी को यूज कर पाता है कि नहीं, बच्चे की कम्युनिकेशन जो है वो सही है कि नहीं, यानी कि चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट और नॉट. इसी तरह से बच्चे में कोई आईसाइट रिलेटेड इश्यू तो मत है. ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस आर कलेक्टेड और गैदर्ड बाय द पेरेंट्स with the help of observation. That observation is known as parental observation, या हम कह सकते हैं parental screening. अगर बच्चे में विजन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली चाइल्ड जो है उसकी आंखें लाल भी हो सकती है, वो अपनी आंखों को रब भी कर सकता है, या हाई लेवल ऑफ एक्वस आंखों में होगा जिसे हम कहते हैं ग्लूकोमा डिफेक्ट. इसी तरह से हियर रिलेटेड स्क्रीनिंग पेरेंट जो है वो देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि हमारा बच्चा साउंड उसको सुन पाता है कि नहीं, उसमें डिलेड स्पीच तो नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट लेट हो गई है, सो इट इज ऑल्सो द इंडिकेशन
for the hearing loss. Apart from vision and hearing, बच्चे का साइकोमोटर डोमेन, हमारा बच्चा मोटर ऑर्गन्स को यूज कर पाता है कि नहीं. These types of examinations will be noticed and information collected by the parents. Number 3, teacher input or school screening. School screening is conducted within the juncture of the school. Especially school screening teachers conduct करते हैं. इसीलिए जरूरी है एक टीचर के पास नॉलेज होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन की, so that teacher can detect hearing related issues, eyesight related issues, or other types of disabilities like locomotor disability. टीचर को सिर्फ फोकस नहीं होना चाहिए कंटेंट पे, what the teacher has to teach, टीचर को क्या पढ़ाना है. कंटेंट से पहले टीचर के पास कंप्लीट एक विजन और मिशन होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स हेल्थ. किसी बच्चे में हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है. क्या बच्चा क्लासरूम में या आउटसाइड द क्लासरूम अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को यूज कर पाता है कि नहीं. बिकॉज सेंसेस आर कॉल्ड द गेटवेज ऑफ नॉलेज. एवरी बिट ऑफ नॉलेज इज रिसीव्ड थ्रू डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स. अगर बच्चे में इश्यू होगा सेंस ऑफ हियरिंग का, इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक टीचर की, वो ऑब्जर्व कर ले सेंस ऑफ हियरिंग को कि बच्चा अपनी सेंस ऑफ हियरिंग को यूज कर पाता है कि नहीं. बच्चे में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो मत है, बच्चा अपने मोटर ऑर्गन्स को यूज कर पाता है कि नहीं. इसी तरह से बच्चे में विजन की प्रॉब्लम तो मत है. These types of information should be collected by the teacher in order to detect the problems faced by the children or simply the learners. Number 4, audiologist or ENT examination. Audiologist is that person who is having the specialization in the field of audiology. And same way, ENT. The full form of ENT is ear, nose and throat specialist. ये hearing related issues चेक करते हैं एक बच्चे की. Because audiologist and ENT, these are the professional persons who conducted the various tests. और उन टेस्ट्स को कहते हैं हियरिंग टेस्ट्स. हियरिंग टेस्ट से ये डायग्नोस करते हैं कि बच्चे में नॉर्मल हियरिंग है और द चाइल्ड पॉजेसेस द हियरिंग लॉस. यानी कि किस फ्रीक्वेंसी पे बच्चा साउंड्स को सुन पाता है. इट मीन्स बाय कंडक्टिंग द हियरिंग टेस्ट्स, the audiologists or ENT specialists, they categorize and classify hearing impaired children into various categories. It depends upon the hearing loss. कि बच्चे में माइल्ड हियरिंग लॉस है, स्लाइट हियरिंग लॉस है, मॉडरेट हियरिंग लॉस है, या बाय एंड लार्ज प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है. नंबर 5, मेडिकल रिव्यू and genetic testing. As we know that genetic simply means transmission of characteristics from parents to offsprings. किस तरह से पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट हो जाते हैं उनके बच्चों में, आई मीन टू से यू ऑफस्प्रिंग्स में. इसीलिए 3 रिव्यूज किए जाते हैं. First review is known as child medical review. बच्चे का मेडिकल रिव्यू किया जाता है in order to know the overall health of the child. क्या बच्चे में नॉर्मल हेल्थ है कि नहीं. Does not the child possesses any ailment.
बच्चे के सेंसरी ऑर्गन्स नॉर्मली फंक्शन करते हैं कि नहीं, लाइक सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्पीच, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर बच्चे में कोई भी इशू है, इशू रिलेटेड टू आई साइट, इशू रिलेटेड टू हियरिंग, by and large problems related to the motor organs or speech, ये प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने के लिए चाइल्ड्स मेडिकल रिव्यू किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इफ चाइल्ड possesses any type of problem, उसके बाद सेकंड रिव्यू किया जाता है, दैट इज नोन एज फैमिली रिव्यू। अगर बच्चे में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, फॉर इंस्टेंस आई साइट रिलेटेड इशू और हियरिंग रिलेटेड इशू, फिर फैमिली को चेक किया जाता है, उनकी फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। क्या बच्चे के पेरेंट्स में हियरिंग का इशू तो मत है, आई साइट रिलेटेड इशू तो मत है। इट मीन्स डीपली इंफॉर्मेशन एंड एग्जामिनेशन इज कलेक्टेड related to the health of the family members, चाहे पेरेंट्स है चाहे फोर फादर्स है। फैमिली हिस्ट्री जानी जाती है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज गिवन बाय जॉन गिगर मेंडल। अगर बच्चे में कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है, सेंस रिलेटेड इशू है, चाहे हियरिंग इंपेयरमेंट है या विजुअल इंपेयरमेंट है, और इसका कनेक्शन हो भी सकता है रिलेटेड टू द फैमिली मेंबर्स, इसीलिए फैमिली रिव्यू करना पड़ता है। थर्ड रिव्यू इज नोन एज डीएनए रिव्यू। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और डीएनए एनालिसिस की जाती है ताकि हमें पता चल जाएगा ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड्स मेटाबॉलिज्म, चाइल्ड्स ब्लड प्रोफाइल, चाइल्ड्स ओवरऑल हेल्थ कंडीशन। नटशल में हम कह सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग या मेडिकल रिव्यू, इट इज कंडक्टेड बाय द जेनेटिक काउंसलर्स एंड अदर हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट्स। Number 6, auditory brainstem response or otoacoustic emissions. Dear students, the hearing test is conducted in order to examine the condition and functioning of the cochlea. Cochlea की function जानने के लिए hearing test conduct किया जाता है। As we know that cochlea is basically spherical shaped organ which is located in the inner ear. इसीलिए our inner ear, I mean to say you cochlea, it is filled with the fluid. जो cochlea है ये साउंड वाइब्रेशंस को या हम कह सकते हैं साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, so that brain can understand and interpret the electrical signals. Dear students, अगर कॉक्लिया में डिफेक्ट होगा, चाइल्ड कैन नॉट प्रॉपरली हियर, वो नहीं सुन पाएगा, इसीलिए कॉक्लिया का टेस्ट किया जाता है एंड दैट टेस्ट इज नोन एज ऑटोएकोस्टिक इमिशन टेस्ट। ऑटोएकोस्टिक इमिशन टेस्ट में ये बेसिकली हियरिंग टेस्ट होता है जिसमें बच्चे के कान में ईयरफोन्स फिक्स किए जाते हैं, फिर एक्सटर्नल साउंड इंड्यूस किया जाता है इन ऑर्डर टू मेजर हाउ द हियरिंग नर्व्स एंड ब्रेन रेस्पॉन्ड टू द साउंड्स। क्या हियरिंग नर्व्स और ब्रेन जो है वो साउंड्स को रेस्पॉन्ड कर पाता है कि नहीं। अगर बच्चे ने साउंड को रेस्पॉन्स नहीं दिया, it means that child has a definitely hearing issue and we can label the child hearing impaired.
Number 7, speech perception tests. Speech perception tests are those tests which are used to detect whether the child is able to understand, discriminate, and pronounce different speech sounds. क्या एक बच्चा डिफरेंट स्पीच साउंड्स को अंडरस्टैंड कर पाता है, डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, बाय एंड लार्ज प्रोनाउंस कर पाता है? फॉर इंस्टेंस, प एज इन पैट, ब एज इन बैट, ट एज इन टॉय, ड एज इन डॉग, क एज इन कैट, ग एज इन goat, S as in sit. This was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss another important moot issue that is entitled as causes or etiology of hearing impairment. Dear students, इस यूनिट में हमें 9 कैटेगरीज डिस्कस करनी है, लाइक विजुअली इम्पेयर्ड, hearing impaired, speech impaired, orthopedically impaired, mentally retarded, gifted, creative, delicatess, by and large, learning disabled. और हर एक कैटेगरी के राउंड अबाउट 6 लेक्चर्स डिलीवर करने हैं. इट मीन्स सम अप ऑफ लेक्चर्स बिकम्स 54. Hopefully believe that you will be connected with your channel. Grow strong.